So hello guys, welcome back to my YouTube channel Hasta Education. So in this video I am going to discuss about equations of motions. Alright, so let's get started. So here it is the general equations of motion for uniformly accelerated motion. Okay, so these are the general equations of motion for uniformly accelerated motion. Okay, this is a very important word, uniformly accelerated motion. Alright, these equations are valid only for uniformly accelerated motion. Okay, the equation number 1, v vector equals to u vector plus a vector times t. Okay, and this equation is in terms of u, v, a and t. Okay, next equation is displacement vector is equal to ut plus half at square. Okay, and this is in terms of s, u, a, t. Okay, third equation is s equals to vt minus half at square. Okay, and this is in terms of v, s, a, t. Okay, the fourth equation is s equal to u plus v upon 2 into t. Okay, and this equation is in terms of s, u, v, t. Okay, if any of the three quantities is given, then in order to find out the fourth quantity you can apply this formula. Okay, similarly the fifth equation is v vector dot v vector equal to u vector dot u vector plus 2 times of acceleration vector dot displacement vector. Okay, or in other words you can say that v square equals to u square plus 2as. Okay, and this is equation in terms of v, u, a and s. Okay, if any of the three quantities is given, then you can apply this formula. Okay, so here is a note point. These equations are valid only and only for uniformly accelerated motion. Okay, so this is very important point. These equations are valid only and only for uniformly accelerated motion. Okay, or you can say that constant accelerated motion. Okay, these equations are valid only when the acceleration vector is constant. Okay, so this is the very important things. Okay, these equations are valid only for uniformly accelerated motion. In case of non-uniformly accelerated motion, we cannot apply this formula. Okay, so since acceleration is a vector quantity, alright, acceleration is a vector quantity. So by constant acceleration, alright, we mean that magnitude should be constant and the direction should be fixed. Okay, then only we can apply the previous equation of motion. Okay, otherwise we cannot apply. So an immediate question arises that what for non-uniformly accelerated motion. Okay, what should we do for non-uniformly accelerated motion? Okay, for non-uniformly accelerated motion or for variable acceleration, we have to take the help from calculus. Okay, we have to apply the calculus. Okay, that means differentiation and integration. Okay, so while going from displacement to velocity to acceleration, we have to apply differentiation like this: v equals to dx upon dt and acceleration is equal to dv by dt, or you can say that v into dv by dx or d square x upon dt square. Okay, this is while going from displacement to velocity to acceleration. Okay, whenever acceleration is given, then you differentiate it to get the velocity, and after getting the velocity you differentiate the velocity to get the acceleration, or you can differentiate the displacement 2 time to get the acceleration. Okay, and this one is also very important formula for acceleration. Okay,
So here is another process, that is integration, and we use integration while going from acceleration to velocity to displacement. Okay, so whenever you are given acceleration, in order to find out velocity, we apply this formula. Okay, velocity equals to the integration of acceleration with respect to time. Okay, and similarly whenever I am giving velocity, then in order to get the displacement, I apply the integration formula. Okay, so displacement equal to integration of velocity with respect to time. Okay, so another thing we have to note down, so all these formulas or all these equations of motions are vector formula. Okay, it's a very important thing, these are all vector formula. Okay, so we have to use proper vector notation. All right, so we have to use proper vector notation or proper sign convention you have to use. Okay, while applying these formulas. Okay, since these equations of motions are all vector formula, so we have to apply or we have to use proper vector notation or proper sign convention. Okay, in special case, while solving 1D motion, we have to take one direction as positive. Okay, we have to take one direction as positive while solving 1D motion. Okay, we have to take one direction as positive and the direction just opposite to it is negative. Okay, so here it is the example. If we are dealing the 1D motion in this direction, then we can take this direction as positive and this direction as negative. So all the quantity which are measured in this direction are taken to be positive and all the quantities which are measured in this direction are taken to be negative. All right, similarly while dealing the motions in vertical, okay, then we can take this direction to be positive and this direction to be negative. So all the quantity which are in this direction are taken to be positive and all the quantity which are in downward direction are taken to be negative. Okay, so we have to use the proper vector formula or proper sign convention. Okay, so here is the procedure to solve 1D motion. Okay, so first of all you have to identify the starting point and ending point. Okay, you have to identify these 2 points. Okay, starting point and ending point between which you want to apply the equation of motion. Okay, this is the first step. You have to identify the 2 points, that is starting point and ending point between which you want to apply the equations of motion. Okay, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से कहाँ अप्लाई करना है, ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा. ओके, आपको स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा और आपको एंडिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना होगा. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा सारे वेक्टर क्वांटिटीज का. एस वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, यू वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, वी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है. आपको ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट एंड नेक्स्ट यू हैव टू राइट डाउन ऑल द क्वांटिटीज विद प्रॉपर साइन. सारे वेक्टर क्वांटिटीज को प्रॉपर साइन के साथ लिखना होगा. ओके, and in this case you have to assume one direction to be positive and the direction opposite to this is negative. Okay, and accordingly you have to write down all the quantities. Okay, now आइए देख लेते हैं ये डायरेक्शंस के बारे में. डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन एट स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन एट स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट में बॉडी किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, दैट विल बी योर डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर. ओके, सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट फाइनल पॉइंट. ओके, फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट में पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, दैट विल बी योर डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर. ओके, डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर इक्वल टू
it is the displacement vector and it is always from the line joining starting to end. Okay, it is always from the line joining starting point to end point. Okay, this is the direction of s vector and it is the direction of acceleration due to gravity. Okay, the direction of acceleration due to gravity is always downward. Okay, ये जो acceleration due to gravity का डायरेक्शन है ये हमेशा डाउनवर्ड की तरह होता है. ओके, तो ये सारे क्वांटिटीज का डायरेक्शन आपको बहुत अच्छा से आना चाहिए. ओके, डायरेक्शन ऑफ यू मीन्स initial direction of motion. Okay, you can say that initial direction of motion. Direction of v vector means final direction of motion. Okay, and direction of s vector is always from starting to end point and the direction of acceleration due to gravity is always downward. Okay, तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं. सो मान लेते हैं ये एक टावर है और टावर के ऊपर से एक बॉल को हम फेंक रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये हाइट है ये टावर का, ये 50 मीटर है. तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हम फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ओके, so one method can be that first of all we have to apply the equation of motion from this to this and again from this to this. Okay, हमें इक्वेशन को टू पार्ट में डिवाइड करना है. पहले यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे फिर बाद में यहाँ से फिर यहाँ के. ओके, फिर वी हैव टू ऐड दैट 2 टाइम्स. ओके, दिस इज वन मेथड एंड इन सेकेंड मेथड वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्टली. ओके, इन दोनों पॉइंट में हमें डायरेक्टली इक्वेशन को अप्लाई करना है. ओके, तो ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा हमारा फाइनल पॉइंट. ओके, इस दोनों पॉइंट में हमें डायरेक्टली इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं चलिए देखते हैं. ओके, सो हियर इट इज आवर द स्टार्टिंग पॉइंट. ये बॉल जब यहाँ आकर के यहाँ गिरा है दिस विल बी आवर एंड पॉइंट. ओके, सो आइए सारे क्वांटिटीज को लिखते हैं. ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द यू. देखिए यू, तो सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन चूज कर लेना है. ओके, किसी भी एक डायरेक्शन का पॉजिटिव मान लेते हैं और उसका अपोजिट डायरेक्शन का आपको नेगेटिव लेना है. ओके, तो मान लेते हैं हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया. ओके, इसी साइन कन्वेंशन के साथ हम सारे क्वांटिटीज को लिखेंगे. ओके, तो देखिए यू वेक्टर का डायरेक्शन का मतलब है इनिशियली बॉडी किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था. ओके, सो दिस इज द इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट. आप देख सकते हैं इनिशियली ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, तो ये यू का साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है. ओके, सो यू विल बी प्लस 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, क्योंकि यू का जो डायरेक्शन था यानी इनिशियल वेलोसिटी का